थैंक यू एवरीबॉडी आज इधर आने के लिए इतने कम समय में थैंक यू सो मच माय टीम अप्रिशिएट्स इट आई अप्रिशिएट इट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वांट टू से कि आई डोंट फील लाइक एन आउटसाइडर. I used to come to Gangtok. Gangtok was my always like a favorite place. Mountains are my favorite, but Gangtok always had a special bonding. जब भी मैं आती थी किसी भी तरह का इमोशनल स्टेट में मैं आती थी, गैंगटॉक में आने के बाद मुझे लगता था कि आई एम एट पीस. And now that I'm coming to Gangtok for the last two visits, to think about it as a location जहाँ पे मेरी movie बनने वाली है, it's a whole different perspective. It teaches me how to notice the little mannerisms. And I am really, really, really grateful to Honorable Chairperson Bashi sir, Honorable Chairperson Rinzing sir, Palmo ma'am, Manoj Lama sir, Manoj Rai sir, Dr. Manoj Rai sir, and to all the locals and to the parents जिन्होंने अपने बच्चों को सबमिट किया ऑडिशन के लिए विदाउट आस्किंग एनीथिंग मच एंड ट्रस्टिंग अस एंड योर किड्स द टैलेंट ऑफ सिक्किम it's phenomenal. They are kids. The lead of the movie एक 13 साल की लड़की है and the bhai is 7 years old. I couldn't believe the talent that I saw in that room because I am an actress. I've done my master's in acting from Los Angeles. I'm based in Los Angeles. मैं Los Angeles की इंडस्ट्री देखती हूँ, मुंबई की इंडस्ट्री देखती हूँ, कोलकाता की इंडस्ट्री देखती हूँ, अहोमिया इंडस्ट्री भी मैंने देख लिया है. इधर के जो टैलेंट है, I really wish, thank you to the government for giving us this platform. And thank you above all to the Honorable Chief Minister, sir, for actually motivating the kids and the future generation. This movie is called The Family I Chose. There's a reason behind the name of this movie. This movie deals with grief, redemption, and bonding. Family beyond blood relationship and beyond lineage. क्योंकि हमारे को जन्म के बाद एक फैमिली मिलता है जो कि ब्लड रिलेशनशिप है. लाइफ के एक्सपीरियंसेस में हमें और लोग मिलते हैं लाइफ में जो हम चूज करते कि वो हमारी फैमिली बनेगी. एंड दैट फैमिली गोज थ्रू ऑल टेस्ट्स, ऑल काइंड ऑफ टेस्ट. उसके बाद भी जो टिक जाते हैं ना, वो असली फैमिली होते हैं. सो द स्टोरी इज अबाउट द फैमिली दैट वी चूज बियॉन्ड ब्लड, beyond lineage, and it's a relationship story between an 86-year-old man and a 13-year-old kid जो कि गैंगटॉक आते हैं. इस फिल्म का स्पेशलिटी ये है कि गैंगटॉक is not just a pretty location in this movie. It's a character in this movie. जब मैं आई थी लोकेशन स्काउटिंग के लिए 6 दिन के बाद मुझे पता चल गया था कि कौन सा सीढ़ी कौन से रोड तक हमें शॉर्टकट में लेके जाते हैं. सो माई विश इज कि जब ये मूवी बन जाए एंड ऑडियंस जब देखेंगे ये मूवी, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि अरे ये सीरीज तो इधर तक जाती है. You know, so that's how familiar people should be with this place. And that is how Gangtok is a character in this movie. And that is the reason that these honorable, amazing human beings have supported this movie. And I know that Honorable CM Sir is also trying his best to meet us, and he's really busy. But I just want to take this platform to thank him on behalf of my team as well for having such an amazing team that represent him. So thank you so much. Today we are here for a special reason. Today we have found the lead of our film, The Family I Chose, जो कि आज sir announce करेंगे. And other than them, every other actor जो भी है इस फिल्म में, they are going to be local. जो 2 और सपोर्टिंग लीड्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता एंड मुंबई. वेटरन एक्टर वरुण चंदा सर जो अपने करियर की स्टार्टिंग किए थे विद सत्यजीत रे's फिल्म शीमा बौद्धो. एंड एक्ट्रेस वी आर स्टिल इन द टॉक बिटवीन ललित दुबे मैम एंड दीप्ति नावल मैम. सो शी विल बी कमिंग फ्रॉम मुंबई. बारिंग दीज 2, इनको छोड़ के बाकी के जितने एक्टर्स है सब लोकल होंगे. बाकी के जितने क्रू मेंबर्स है लाइक हेयर ड्रेसर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, ग्रिप, सारे के सारे लोकल चाहिए हमें बिकॉज दैट इज वेयर द ट्रू फ्लेवर कम्स. मैं कोलकाता से किसी को लेके आऊंगी तो उनको इधर का फ्लेवर पता नहीं चलेगा. सो टू कीप द ऑनेस्टी एंड टू कीप द फ्लेवर, वी आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व एज मेनी लोकल पीपल एज वी कैन, एंड दैट्स वेयर यू गाइज कम इन. आई कैन नॉट डू दिस मूवी without your help. I cannot do this movie without the locals' involvement. So the family I choose on behalf of my team, I am choosing you guys as my family.
So please welcome me, help me, love me, and just be by my side and my team's side. Thank you. नमस्कार। विशेष गरी आज तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो है, सिक्किममा एउटा अति नै राम्रो एउटा हामीले अपर्च्युनिटी पाएको छौँ र हाम्रो गङ्गना म्याडमले एउटा एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट ल्याएर हामी माझमा आएको थियो र त्यसमा हाम्रो सिक्किमको विशेष कलाकारहरूलाई उहाँले फिल्ममा अपर्च्युनिटी दिने, हाम्रो बाल कलाकारहरूलाई दिने। त्यसमध्ये 300 भन्दा ज्यादाले अडिसन दिएको थियो भन्ने हामीले सुन्यौँ है। त्यसमा हाम्रो सानो नानी आराध्या राई है, जो सिक्किमबाट हाम्रो नानी, उहाँ सेलेक्सन भएको रहेछ र उहाँलाई म कङ्ग्रेचुलेसन पनि गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै उहाँको फिल्ममा है, उहाँको आराध्या राई रहेछ है त नाम चाहिँ, तर फिल्ममा लिड रोलमा रहेछ र फिल्ममा चाहिँ उहाँको चाहिँ फुल रहेछ नाम। र सायदै तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना नानी। सायद तपाईँको यो नामै फुल भएर जान्छ होला अनि जाओस् भन्ने म चाहन्छु, अनि फुल जस्तै फप्नेर जाओस् र अरू अरू फिल्ममा पनि तपाईँले मौका पाओस् भन्ने म यही तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, गुड आफ्टरनुन है। र आज सिक्किममा यो ऐतिहासिक चिज भइरहेको छ। तपाईँको फर्स्ट टाइम तपाईँको यति राम्रो रिनाउन्ड एउटा फिल्म मेकर, प्रड्युसर एन्ड एक्ट्रेस कङ्कना चक्रवर्ती बेस्ड इन तपाईँको लस एन्जलसमा उहाँले आउनु भएको छ र उहाँले हाम्रो लोकल ट्यालेन्ट्सहरूलाई उहाँले सपोर्ट गर्नुहुँदैछ। जति पनि लिड एक्टर्स छ, एक्ट्रेसहरू छ, एक्ट्रेसेसहरू छ, सबै सिक्किमकै छ। र तपाईँको सेकेन्ड लिड एक्टर चाहिँ तपाईँको एल्किन राई रहेछ, जो चाहिँ 7 वर्षको उमेर हो तपाईँको। र उहाँको फिल्ममा उहाँको नाम चाहिँ श्याम छ। तपाईँको श्याम त तपाईँको कृष्णको अर्को नाम श्याम हो है। म कृष्ण भगवान् जस्तै राम्रो भएर जाओस्, फैलिएर जाओस् है, आशीर्वाद होस्, राम्रो होस्। थ्याङ्क यू सो मच। जो फिल्मको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो कङ्कना चक्रवर्ती, उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुरा सिक्किमेको तर्फबाट है। उहाँले यति साह्रो राम्रो हाम्रो नानीहरूलाई, एउटा सिक्किमको नानीहरूलाई उहाँले अपर्च्युनिटी दिनुहुँदैछ है, एउटा मौका दिनुहुँदैछ, यत्रो ठुलो अब प्लेटफर्म दिनुहुँदैछ। त्यसको लागि म एकदमै हाम्रो सिक्किमेको तर्फबाट म हाम्रो म्याडमलाई, डाइरेक्टर म्याडमलाई थ्याङ्क यू सो मच म्याडम, थ्याङ्क यू सो मच है, यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। र उहाँ यहाँनिर एउटा स्मारिका गुरुङ हुनुहुन्छ, अनि ऊ चाहिँ एउटा उसको उहाँको फिल्मको किरदारमा चाहिँ उहाँले एउटा निमाको रोल निभाउनु हुँदैछ है। निमा उहाँ भएर जान्दैछ, उहाँ स्मारिका गुरुङ एज अ निमा भनेर जान्दैछ उहाँ। As Panguna said, thank you Kankana for creating this wonderful platform for the artists of Sikkim. And this idea is totally resonates with our vision of Honorable Chief Minister sir. Thank you for that. यो नाम चाहिँ रहेछ जसको सपोर्टिङ रोल छ लावाङ जोल्मा लेप्चा एज अ प्रीति फिल्ममा। थ्याङ्क यू। विशेष गरी म फिल्म बोर्डको चेयरम्यान भएको नातामा म अति नै खुसी छु। यति राम्रो एउटा फिल्मको एउटा प्रोजेक्ट लिएर हाम्रो कङ्कना म्याम हामी माझमा पाउँदा, अनि यो सबै श्रेय हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई जान्छ। जुन सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको जुन भिजन, जुन कलाकारहरूप्रतिको माया है, कलाकारहरूप्रतिलाई जुन दिएको उहाँको जुन उदार हृदयले गर्दाखेरि आज विश्वमा नै सिक्किमकोमा चाहिँ सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले चाहिँ हरेक क्षेत्रको कलाकारहरूलाई चाहिँ यति साह्रो माया गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले सिक्किम बाहिर पनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको जुन भिजनलाई उहाँहरूले चिनेर हेरेर र सिक्किममा चाहिँ कलाकारहरूको बहुतै इज्जत छ, सम्मान छ, त्यहाँ गएर हामीले यो कामहरू गर्नुको लागि एकदमै सुविस्ता हुन्छ भन्ने जुन उहाँहरूले महसुस गरेर हामी माझमा ठुलो विश्वास राखेर आउनुभयो। र उहाँहरूको प्रोजेक्टमा पनि हामीले के देख्यौँ भन्दा चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले हाम्रो सिक्किमको कलाकारहरूलाई यति साह्रो प्लेटफर्महरू दिइरहेको छ भने वाइ नट यति राम्रो मुख्यमन्त्री महोदयको स्टेटमा गएर हामीले त्यहाँको नानीहरूलाई पनि हामीले केही टेउ पुर्याउन सक्छौँ भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ। र विशेष गरी म मेरो फिल्म बोर्डको तर्फबाट कङ्कना म्याडमलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु अनि सीएम साहबलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। आज यो छोटो समयमा यहाँनिर यो एउटा हिस्टोरिक भनौँ है मोमेन्ट हामी यहाँ सेयर गर्नु पायौँ तपाईँहरूको माध्यमबाट। एकदमै यो अति नै असल कुरा भएको छ आज, जो सिक्किमको
4जना नानीहरूको नाम अहिले यहाँनिर एनाउन्स भइसक्यो जो जो उहाँ नानीहरूलाई एकदमै बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु र भविष्यमा यसरी नै धेरै अघि बढेर जाओस्, सिक्किमको नाम देशकै नाम रोशन गरोस् भन्ने हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र विशेष यहाँनिर ड्रिम बोर्डका चेयरम्यान सर काशी सिरिङ सर, साथै चेयरम्यान स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट बोर्ड रिन्जिङ अम्बे छोपेट सर, अनि त्यस्तै प्रकारले पाल्मु शेर्पा जो बुटुल निर्वाचन क्षेत्रका सिएलसी प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, साथै कङ्कना चक्रवर्ती म्याम जो यस फिल्मको कर्ता धर्ता हुनुहुन्छ, अनि यहाँ मसँग डाक्टर मनोज राई भाइस प्रेसिडेन्ट एसकेएम कसोरी, साथै समस्त मिडियाकर्मी र यहाँनिर अभिभावकहरू पनि आउनुभएको छ। सबैलाई यो छोटो समयमा यहाँनिर उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। As I said, ma'am, Gangtok always had a very special place for me, like specifically Gangtok in all of Sikkim. I used to come here as a tourist, and I used to come here जब भी इंडिया में जब भी मुझे लगता था कि मैं खो चुकी हूँ कहीं पे, because you know I have a life in Los Angeles and India, so I keep on shuffling. People ask me the question, where is home? I still don't have an answer to that. Where is my home? But whenever I came to Gangtok, I used to feel like somehow I'm closer to that answer. I have come to Gangtok with an emotional state jahan pe I was probably depressed. I have come to Gangtok with an emotional state jahan pe I was really looking for something, for an answer. And ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जन को जानती थी, मैं अनीता को जानती थी, she was a friend, and you know I knew just a couple of people around here, but I didn't feel like I needed to know somebody to feel at home. That is the vibe जो मुझे गैंगटॉक देती थी and हमेशा देती रही। तो इसीलिए मैंने ये कहानी मैंने लिखा था लॉस एंजलिस में बैठ के, you know, and I couldn't think of any other place because as I said, it's not a pretty location. Pretty location दिखाना है तो मैं कहीं और जाके दिखा दूँगी। Mountains are anyways my favorite. But this is also my way of giving back to Gangtok what I have received from Gangtok, because I have chosen Gangtok as my home. It's not given to me. So that's why it comes to the title again. It's like what we choose stays with us, because that goes through a lot of turmoil. And then you say that, yeah, this is still around and with me, you know. So Gangtok is still with me. I still feel at home. I've been here, मैं भूल भी गई 31st को मैं आई हूँ, अभी लगता है कि कल ही तो आई थी, you know, अभी जाने का भी टाइम हो जाएगा. So every time I feel कि मुझे जाना है, I get choked up, you know, and that is how special it is. Words cannot do justice to how it feels. And as I said again, this movie is my way of giving back to Gangtok and to the talent of Sikkim. Talking about movie, what is it about, and what is the language spoken in this movie? So the movie, it's a feature film. The language is Nepali, Hindi and English. जैसे हम लोग बात करते हैं normal life में. So वैसे ही it will flow. There is no like इतना chunk हिंदी में है, इतना chunk नेपाली में है. It will flow. It should look natural, sound natural. What is the film about? The film, it's a powerful drama. It's a relationship story. And the film is about grief, about redemption, and it's about the family that we choose that's beyond blood and lineage. So that's all I'll say. It's going to make you cry. Attached to the Sikkimese people? Is it Yes, related to the Sikkimese it is absolutely. Like, it's not. See, here as a storyteller, we do choose a place where the story is based, right? But as a storyteller, we cannot just focus on this story. Then that becomes a documentary. When we are seeing a feature film, ये सिक्किम के बाहर भी रिलीज होगा, लोग देखेंगे, लॉस एंजलिस में लोग देखेंगे. So when I'm writing a story, I have to keep in mind that I talk about stories or relationship जो universal होता है. जो आप इधर सिक्किम में बैठ के देखोगे, आप कनेक्ट कर पाओगे. जो लॉस एंजलिस में बैठ के देख रहा है, वो भी they should also connect. It happens to be in Gangtok. So the relationship, it is universal. The emotion that you're asking, it's universal. किसको नहीं पता है grief क्या होता है? किसको नहीं पता है कि redemption ढूंढना क्या होता है? किसको नहीं पता है कि guilt trip क्या होता है? And किसको नहीं पता है कि relationship क्या होती है? Is there any particular exact place that you're going to shoot the entire? Yes, ma'am. So the whole thing is concentrated in Gangtok. Every location is in Gangtok. I do not want to spread all over because as I said earlier in my introduction, कि जब मैं इधर आई for the last 2 visits to scout for the location, to understand the people, I was seeing Gangtok with a different perspective, जो कि tourist के perspective से अलग थी.
So I noticed a lot of things and I realized कि जैसे मैंने बोला कि एक सीढ़ी इधर से शॉर्टकट उधर जाता है, वो रास्ता घुमा के लेके आता है. Those are the heart and soul of Gangtok, this place. And I want the audience of the film universally to know कि ये सीढ़ी इधर ही जाती है, ये सीढ़ी उधर का फ्लाईओवर तक ही जाता है. By the end of the movie you should feel कि ये तो हमारा ही neighborhood है, ये तो हमारी कहानी है. So that's why I do not want to spread my wings and choose a location somewhere in Rabanga, somewhere here, somewhere West Sikkim, South Sikkim. ऐसा नहीं. It's all in Gangtok. It's all concentrated there. Although you have come before also to visit, but I think this is the first time shooting video in. Absolutely, yeah. This is my what first. kind of support would you like to expect from the audience or the public? And of course, the government of Sikkim is also help you out. What would you like to say? The government. I am incredibly grateful to Honorable Chairperson Rinzing sir, because he was the one who saw me and he kind of like, he came in this movies project as a masiha, like he just came in and he heard the story, and then Honorable Chairperson Tashi sir, he came in, Manoj Lama sir came in, Dr. Manoj Rai came in, Palmo ma'am came in. It just all became, together. I came in as a director who was looking for a location. I did not come in with this expectation that I'll be getting this support or today such a press conference will be happening. ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था. मैं आई थी लोकेशन देखने के लिए, अपने पैसे से मैं बना रही हूँ, छोटा सा एक मूवी है, कहानी है, दिल से बनाना चाहती हूँ, तो वही सोच के मैं आई थी. अभी आपका जो क्वेश्चन है कि what do I expect from the people, the story is about you all. It's about the locals. I cannot make a story alone. एक फिल्म हम लोग 2 घंटे के लिए मूवी थिएटर में बैठ के देखते हैं और हम लोग 2 घंटे में जज करते हैं कि मूवी अच्छी लगी कि बुरी लगी, बट nobody really understands कि क्या प्रोसेस रहता है एक मूवी बनाने में, to pick the right crew, to pick the right cast. इतने सारे as mentioned 300 से ज़्यादा auditions, and अभी भी हमारे पास सारे के audition दे सकते हैं क्या, that kind of a thing. So from the locals, I just want you to be by my side, by my team's side, because as I said, that you guys are the family that I chose to tell my story. I need you all. Without you all, I cannot tell the story of Gangtok. I need you all. Any support is welcome. Spread the news that a film like this is happening. The shoot begins November, because we want a very specific weather. So November mein shoot begin ho raha hai. So from the locals, I just need all the love and support that I can get. Any suggestion, I am approachable. I'm very approachable. Reach out to me. You have any question, you want to be a part of it, you have some strengths that we don't know about, because crew mein bahut sare positions hote hain. So agar aapko lagta hai ki I can contribute to this movie in this way because this is my strength, please come forward. And how do they contact you? I can give my number, my Instagram handle, Facebook. I'm absolutely reachable. आप अगर बोलोगे तो मैं अभी बोल सकती हूँ, या तो आप लोग बाद में भी ले सकते हो. Please reach out to me, talk to me. I want a conversation. I don't want कि अरे ये तो director मैम है, इसको कहाँ कैसे हम लोग छुए, ऐसा नहीं है. I can only tell a story if I know you. Without knowing you guys, I cannot tell a story. So, and I want to be honest as much as I can. So please reach out to me, tell me, talk to me, bring in front of me your strength, and definitely we can have you in the team. Thank you.